बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव sentences. Now, number 1. Father has taken medicine. That is affirmative. क्या मीनिंग्स होगा इसके? फादर हैज टेकन ए मेडिसिन, अब्बू दवा ले चुके हैं या अब्बू ने दवा ले ली है। नेगेटिव पे आते हैं। फादर हैज नॉट टेकन मेडिसिन। क्या बनाएंगे? नेगेटिव। नाउ द थर्ड वन, इंटरोगेटिव। हैज फादर taken medicine, and in the last question mark, that is interrogative. Father has taken medicine, father has not taken medicine, has father taken medicine, right? Now the second one, okay. She has sold her mobile. She has sold her mobile. Yes, क्या मीनिंग्स हुआ इसके? कि वो अपना मोबाइल बेच चुकी है। ठीक, सेल की सेकंड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट? तो क्या होगा? शी हैज सोल्ड हर मोबाइल, कि वो अपना मोबाइल बेच चुकी है। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी हैज नॉट सोल्ड हर मोबाइल। नाउ इंटरोगेटिव। Has she sold her mobile? Now the second one, third one, sentence. बल्कि we कर लेते हैं कि we have sent her message. We have sent her message. हम उसे मैसेज, पैगाम भेज चुके हैं, दे चुके हैं, राइट? तो इसका क्या बनेगा? नेगेटिव। We have not sent her message. Now interrogative. Have we sent her message? In the last question mark. We have sent her message, we have not sent her message, have we sent her message? I have informed you. I have informed you. मैं तुम्हें बता चुका हूँ या मैं तुम्हें बता चुकी हूँ या मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है? सो नेगेटिव, I have not informed you. Interrogative, have I informed you? In the last question mark. Now, last one. Kinza has drunk milk.
किंजा ने दूध पी लिया है या किंजा दूध पी चुकी है, ठीक। तो इसका क्या होगा नेगेटिव, किंजा हैज नॉट ड्रंक मिल्क। इंट्रोगेटिव, हैज किंजा drunk milk। in the last question mark, drink, drank, drunk, पीना, ठीक, उसकी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो किंजा हैज ड्रंक मिल्क, किंजा ने दूध पी लिया है। किंजा हैज नॉट ड्रंक मिल्क, किंजा ने दूध नहीं पिया है। हैज किंजा ड्रंक मिल्क, क्या किंजा ने दूध पी लिया या पी चुकी है, राइट। तो ये था हमारे प्रैक्टिस सेशन। सिंपली आपने भी उर्दू में अपने माइंड में बेकिंग करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम भी 25 सेंटेंसेस आप जरूर बनाया करें प्रैक्टिस सेशन में, मेरे सेंटेंसेस के अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को सामने रखकर। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत आसानी से आपको ये आगे भी आपको समझ में आते रहेंगे। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।